Morning to everyone. We have started with the new chapter, amalgamation of companies. We have done amalgamation of firm in our SY, second year BCom. In this year, this semester, we have amalgamation of companies, wherein I have discussed with all of you. There are three types: amalgamation, absorption, and external reconstruction. Amalgamation, when a new company is formed to take over the existing two or more companies. Absorption, one existing company takes over another existing company. External reconstruction, same company comes up with a new name. One company, same company, external reconstruction में loss making company comes up with a new name. Are the different types of amalgamation. Today, let us discuss journal entries in the books of vendor company. Vendor company or the transferor company is the one who sells their business, whose business gets closed. So previous lecture, we have discussed the following ledger accounts to be prepared in the vendor company, that is realization account, shareholders account, purchasing company account. So our cash bank account, if the cash bank is not taken over by the purchasing company or the न्यू कंपनी, नहीं तो वो भी लेजर, उसका भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. So today, because ledger का base is journal, let us start with the journal entries in the books of vendor company. Journal entries in the books of vendor company. So let us see the first transaction. जब amalgamation में, we have already seen amalgamation of firm. We have done conversion of firm into a limited company. क्या होता है, जो old business होता है, जो old company होता है, या यू में से vendor company who is selling its business, उसके सारे assets and liabilities को हम ट्रांसफर करते रियलाइजेशन अकाउंट में. करेक्ट. First entry will be assets transferred. Assets transferred to realization account. First, let us transfer the assets. Let us transfer the assets. So what will happen, like I told you, asset is a debit balance. लेकिन उसको कैंसल करेंगे, राइट, asset को कैंसल करेंगे तो it will be debit का opposite credit. but asset कैंसल करना is a loss ना, asset कम हो रहा है, asset को कैंसल कर रहे, it's a loss. ये चैप्टर में भी अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन क्रेडिट, लॉस होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. सो इधर असेट को कैंसिल कर रहे, तो लॉस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. टू various assets account. Now asset को तो ट्रांसफर किया. Our next step will be to transfer the liabilities. Next step is to transfer the liabilities
again liabilities transferred to realization account. Liabilities transferred to realization account. लाइबिलिटी कैंसल हो रहा है. लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी को हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं. ट्रांसफर हो रहा है, कैंसल हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट. सो डेबिट में इट कम्स वेरियस लाइबिलिटीज account. To be specific, we can say outside liabilities. So outside internal liabilities are shareholders fund and reserves and surplus. वो तो शेयर होल्डर्स के कैपिटल में ट्रांसफर होता है. तो अदर देन दैट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. तो ये लाइबिलिटी कम होना, प्रॉफिट, सो रियलाइज क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन. So these two entries we have also done when we were doing the firm. As I told you, amalgamation of firm, and more similar is when we have done conversion. उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है ये चैप्टर. सो असेट्स को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में, लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में. नाउ नेक्स्ट वन, टू रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन ड्यू. Next entry will be to record purchase. Now, what is purchase consideration? We have discussed in the earlier previous lecture. Purchase consideration is the return, is the exchange value, what is given, compensation, what is paid in return of the company, in return of the purchase of the business. बिजनेस को वेंडर कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रहा है, तो उनको इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए, एंड दैट इज परचेज कंसिडरेशन. सो परचेज कंसिडरेशन ड्यू है, तो परचेज कंसिडरेशन मिलेगा, तो दिस विल बी व्हाट, परचेज कंसिडरेशन मिलेगा. तो ये इनकम है, फ्यूचर में इनकम मिलने वाला है, तो इनकम मीन्स रियलाइजेशन विल बी इन द क्रेडिट. दिस विल कम इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. And who will be paying the purchase consideration? न्यू कंपनी. परचेज कंसिडरेशन कौन पे करता है? न्यू कंपनी. सो उसको हम बोलते हैं जो हमारा बिजनेस को परचेज करता है, दैट कंपनी विल पे द परचेज कंसिडरेशन. सो परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन will be the entry to record purchase consideration due. Now, next one. So next one, after PC को record कर लिया, PC due. अब we will see sale of a asset not taken over by the purchasing company. अब हम लोग क्या करते हैं, पीसी में it may be net asset, it may be net payment, it may be lump sum. I have discussed in the previous lecture. Now, what happens when the business is purchased? The assets and liabilities of the vendor company also is transferred to the purchasing company. बिजनेस जब परचेस होता है तो असेट्स एंड लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर किया जाता है न्यू कंपनी को, परचेसिंग कंपनी को. बट सपोज इफ एनी असेट इज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, और
उसको क्या करेंगे हम? फॉर सेल ऑफ asset not taken over by purchasing company या new company. It may be two type of asset, recorded one or unrecorded one. Recorded assets are those assets whose mention is there in the balance sheet. Recorded assets are those assets which are mentioned in the balance sheet. Unrecorded are those which are not shown in the balance sheet. अब कोई भी टाइप का asset रहने दो, recorded, unrecorded. जब sell होता है तो what will come? Sell होगा वो asset, तो we will get money. Sell करेंगे तो what we will get? We will get money when we are selling our asset. Let it be recorded, unrecorded. We will get the money. Let me remove this space. Okay. So, to पैसा आया when we have sold the asset, be it the recorded or unrecorded one. I have told you what is recorded, which is mentioned in the balance sheet, unrecorded, not mentioned in the balance sheet, whose record is not there with us in the balance sheet. So cash bank to पैसा आ रहा है, sale में we will call it realization, credit because income. Same way, we saw for asset. Now let us see for the payment of liability not taken over by purchasing company. Payment of a liability not taken over by payment of liability not taken over by purchasing company, or the new company is not taking over this liability. It may be recorded one or unrecorded one. Meaning is the same. Recorded means it's shown in the balance sheet liability side. Unrecorded liability means its mention is not there in the balance sheet of the company. So what will happen? अब इसको पे करेंगे, liability पे करना expense है, so debit all expenses and losses. Realization account debit, amount के लिए XXX, and to what will go out when we will make a payment? Now again, I don't want this gap, so I will remove it. This is also done. Now let us see dissolution expense. What is dissolution expense? Dissolution expense are the realization expenses. जब assets को sell, liability को pay, ये जो प्रोसीजर हो रहा है डिसोल्यूशन का, डिसोल्यूशन मीन्स क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस, तो जो भी एक्सपेंसेस हुआ उसको कौन पे करेगा? Suppose dissolution expenses, or you may call realization expenses, is paid and borne by the vendor company. Vendor company is the seller company, transferor company. अगर इसने ट्रांसफरर कंपनी ने सपोज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोन किया, पे किया, सो
what will we do? This transferor company is the vendor seller company. तो पे करेगा तो हम ये सेलर कंपनी के बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी. वी आर पासिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी एंड ये वेंडर कंपनी ने डिसोल्यूशन एक्सपेंस को पे किया. सो व्हाट विल हैपन, इनका पैसा बाहर जाएगा एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस रहने दो, इनकम होने दो. वी विल गिव द इफेक्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट. So realization account debit to what will happen again, realization expense pay करेंगे तो money will go out. Again we don't want this gap. So I'll remove it. So this dissolution expense when it is paid and borne by the vendor company. Pay भी vendor ने किया, vendor के ऊपर ही है. It has been told in the agreement that vendor has to look after it, pay it. So क्या हुआ, expense हुआ, पैसा बाहर गया, money goes out, credit goes out and expense हुआ तो debit all expenses and losses. यहाँ पे we will be income होने दो, expense होने दो. Realization account को we will be giving the effect like we used to do when we are in our TYBCOM also, same way. Abhi one more situation can happen, that is dissolution expense. Dissolution expenses paid by vendor company but reimbursed by purchasing company या new company. Means now at present the vendor company will pay. At present the vendor company will pay the realization expense. कौन पे करेगा रिजोल्यूशन एक्सपेंस, वेंडर कंपनी. बट बाद में परचेसिंग कंपनी विल रीइंबर्स द अमाउंट टू द वेंडर कंपनी. सो अभी पे किया बाद में वापस मिलेगा, तो अभी पे किया सो व्हाट हो जाएगा. यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक तो ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन expense by vendor. तो वेंडर कंपनी ने एक्सपेंस पे किया तो किसके बदले में पे किया, परचेसिंग कंपनी, बिकॉज वापस मिलने वाला है. इट्स नॉट द परचेसिंग कंपनी अकाउंट. and what is going out, पे किया तो कैश इज गोइंग आउट. and one more thing, next to one is on reimbursement. By purchasing reimbursement. Reimbursement मतलब money is coming back and who is paying, purchasing company. Let me adjust. And who will be paying, cash reimbursement में पैसा वापस मिला dissolution का. and who has given,
purchasing company. And one more thing, note if there is any difference between the payment and the reimbursement, it has to be adjusted in the realization account. If there is any difference of amount in the payment and reimbursement of resolution expenses, it should be adjusted by debiting or crediting. Any difference, it can be more or less, debiting or crediting the realization account. Any difference, if any, will be adjusted by the realization account. Next one, resolution expenses paid and borne by the purchasing company, new company. Resolution expense paid and borne by the purchasing company. तो purchasing company resolution expense पे करने वाला है, borne भी वही करने वाला है, तो vendor company में कोई entry आएगा? If resolution expense is paid and borne by the purchasing company, then there will be no entry in the vendor's book. This will be no entry. वेंडर बुक में कोई एंट्री नहीं आएगा. अगर resolution expense will be paid and borne by the purchasing company, then in the books of vendor company, because there is no effect, pay भी purchasing company करेगा, borne भी वही करेगा, so vendor company के books में कोई effect नहीं होता, so there will be no entry. There will be no entry in the books of the vendor. Vendor के book में there will be no entry passed. Next one, amount due to preference. बस share company है, so there will be two kind of shareholders, equity and preference. So amount due to preference shareholders. Preference shareholders को क्या ड्यू रहेगा? अभी कंपनी बंद होने वाला है तो उनको उनका कैपिटल मिलना चाहिए. So here what will be due to the preference shareholder? Their capital. तो उसको कैंसल करेंगे. Preference share capital is a liability. Preference share capital is a liability. Liability credit balance, but कम हो जाएगा. So we will show it in the debit. Preference share capital account debit to किसको कैंसिल करेंगे? ये पैसा किसको देना है? To the preference share holders account. We will give the money to the ड्यू का एंट्री ऐसे रहेगा, बिकॉज दिस इज रिजोल्यूशन, बंद करना है कंपनी को, क्लोजिंग द वेंडर्स बुक्स. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या ड्यू है, दैट वी विल पास इन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनको दे देंगे उनका कैपिटल. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस बट कम होगा तो डेबिट
And here one more note we have to see. Any difference will be there, profit or loss on payment. It is redemption, repayment, if any, will be adjusted through realization account. Any difference आएगा here? Any difference will come in the preference shareholders account, profit loss, कुछ भी, so that will come in the realization account. Any difference will come in the realization account. Now very important, next one, what we will do, close our realization. So there may be two situations, profit on realization and loss on realization. So what we will do, we will just prepare one ledger account समझने के लिए, profit loss को समझने के लिए एक ऐसे बना देते, ये डेबिट और ये क्रेडिट. Now tell me, अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट है तो कौन सा साइड ज्यादा रहेगा, कौन सा साइड हैवी रहेगा? If it's a profit on realization, then which side should be heavy, debit or credit? Because realization is a nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. अगर profit है तो income ज़्यादा रहेगा, so credit will be more. Credit will be more, so difference will come in the debit. Difference कहाँ आएगा? Difference debit में आएगा. So profit है तो difference will come in the debit. Realization account में profit है तो realization account में अगर profit है, if profit is there, then what will happen? If it's a profit, then difference will come in the debit. Difference will come in the debit. So यहाँ पे realization में profit है, so debit में आएगा realization account, because difference debit में आते हैं, credit side heavy है, difference debit में आते हैं. And किसको मिलेगा ये profit? ये profit किसको मिलेगा? Who are the ones who will get the profit? Realization में profit हुआ तो owners को मिलना चाहिए, and real owners are the equity share holders account. Same way, अगर loss होगा तो, if it's a loss on realization, loss है means expenses ज़्यादा है, loss है means debit side ज़्यादा रहेगा, and जो difference है वो credit में आएगा, and that will be difference. अगर credit में आया तो it will be a loss. Debit heavy रहेगा, so here we will write credit में आएगा difference, so realization credit में आएगा to realization account. And profit अगर equity shareholders को मिल रहा है, if the equity shareholders get the profit, have the right on the profits of the company, if the equity shareholders have the right on the profit of the company, loss also they only have to bear. So यहाँ पे loss होगा तो भी किसको मिलेगा? Equity share holders account. So profit loss is done. Now next one is transfer of equity share capital. अब
ट्रांसफर करना है कैपिटल्स को, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे प्रेफरेंस शेयर का किया, कैपिटल ट्रांसफर होगा, कैंसल होगा, कैपिटल मींस लाइबिलिटी, कैपिटल मींस लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, बट कम हो रहे, ट्रांसफर हो रहे, तो इट विल कम इन द डेबिट। एंड हु विल गेट दिस, ये किसको मिलेगा? इट विल बी गिवन टू द इक्विटी, हु हैज द राइट on the equity share capital? Equity shareholders, equity shareholders account। इसके बाद equity shareholders also have the right on the profits and losses of the company। profit पहले तो क्या करते हैं, transfer of accumulated profits, प्रॉफिट्स टू, किसको मिलेगा प्रॉफिट? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सो वो क्रेडिट बैलेंस है, बट अभी ट्रांसफर हो रहे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर if there is general reserve account debit, any reserve, any other reserve, तो किसको मिलेगा वो? It will go to the equity shareholders, this will be distributed to the equity shareholders account। So I will write here, 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 डेबिट में क्यों? बिकॉज ये ट्रांसफर हो रहा है, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। नॉर्मली रिजर्व्स आर क्रेडिट बिकॉज दे आर लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, बट इसको कैंसल कर रहे तो डेबिट में लिखा। अब नेक्स्ट थिंग, अगर प्रॉफिट इनको मिल रहा है तो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी इनको ही मिलना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो लॉसेस में क्या क्या, अभी लॉसेस असेट साइड में होता है, तो डेबिट बैलेंस कैंसल हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, कैंसल हो रहे पर डेबिट बैलेंस, ये असेट साइड में होता है, ये लॉस है। डेबिट बैलेंस, P&L account debit balance means net loss, and if there is any deferred revenue expenses, any fictitious asset, any fictitious asset, तो वो सब हम किसको देंगे? अगर प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया तो लॉस भी इनको ही मिलना चाहिए। अकाउंट डेबिट, लॉसेस ट्रांसफर्ड। नाउ परचेज कंसिडरेशन जब मिलेगा, रिसीव्ड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन सो परचेज कंसिडरेशन मिलेगा। जब ड्यू था तो देखो कैसा था, when purchase consideration was due, परचेज कंसिडरेशन ड्यू था
परचेज कंसिडरेशन ड्यू था, तो इट वाज परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन. अब परचेसिंग कंपनी वाज इन द डेबिट. अब पेमेंट करेंगे तो परचेसिंग कंपनी क्रेडिट में रहेगा. रिसीट ऑफ परचेज कंसिडरेशन हमने ऑलरेडी मिलेगा करके उसका पता है हमें. अब कैसे मिल सकता है ये परचेज कंसिडरेशन? इट मे बी बाय वे ऑफ कैश बैंक, बाय वे ऑफ मनी. ये कैसे मिल सकता है? बाय वे ऑफ मनी, कैश, by way of equity shares in the new company. Equity shares in new company, which is our purchasing company. It may be preference shares in purchasing company. कैसे डिस्चार्ज किया पीसी? दिस इज रिसीट और पीस ऑफ पीसी, और यू में से पीसी डिस्चार्ज्ड और सेटल्ड. पीसी कैसे दे सकते? कैश में, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में, और एनी अदर मोड ऑफ डिस्चार्ज. एनी अदर मोड of discharge, debentures, or any mode of discharge account debit, it will be given in the question. And who will be? अब परचेसिंग कंपनी डेबिट में था ड्यू के टाइम पे, अब मिल रहा है तो ऑपोजिट इफेक्ट, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट टू परचेसिंग कंपनी. इसका क्या था? पीसी ड्यू का, इट वाज परचेसिंग कंपनी इन द डेबिट. अब मिल रहा है ये सब तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट टैली हो जाएगा न्यू कंपनी अकाउंट के डेबिट में. टू रियलाइजेशन मिलना चाहिए था. व्हेन वी विल गेट दिस, इट विल बी इन द क्रेडिट, एंड डेबिट क्रेडिट ही विल बी इक्वल, एंड परचेसिंग कंपनी विल टैली. नाउ नेक्स्ट वन, सेटलमेंट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेटल. फॉर सेटलमेंट of preference share holders, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सेटल करेंगे. So what will be the entry? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू के टाइम पे क्रेडिट में था. देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू के टाइम पे क्रेडिट में था. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इधर क्रेडिट में था. अब पेमेंट के टाइम पे जब इनको सेटल करेंगे तब डेबिट क्रेडिट का ऑपोजिट, डेबिट. एंड इनको क्या मिल सकता है इनके प्रेफरेंस शेयर्स के लिए? दे मे गेट कैश, दे मे गेट preference shares, preference shares in purchasing company. न्यू कंपनी जो बिजनेस को परचेज कर रहा है. And they may even get equity shares if it is given in the question. Preference shareholders also, उनको भी equity shares देना. तो I will write to any other mode of discharge. Whatever preference shareholders are being given, settlement वैसे. So अभी next last one for settlement of equity shareholders account. For settlement of final में equity shareholders account. तो इक्विटी शेयर होल्डर भी ड्यू के टाइम पे डेबिट में था. देखो, सॉरी, इक्विटी क्रेडिट में था. आई एम सॉरी. ट्रांसफर देखो किधर है? प्रेफरेंस शेयर जैसे ये भी क्रेडिट में है.
अब जब मिलेगा पैसा या जो भी मिलेगा सेटलमेंट होगा तो ऑपोजिट, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट, करेक्ट, क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। एंड इनको भी क्या देंगे, कैश देंगे, इक्विटी शेयर्स देंगे, प्रेफरेंस शेयर, यानी जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा टू कैश बैंक whatever is the mode of discharge to the equity shareholders। सिर्फ कैश देने वाले हैं, कैश के साथ इक्विटी शेयर्स भी देने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स ऑफ विच कंपनी, न्यू कंपनी विच इज अ परचेसिंग कंपनी, और to any other mode of discharge given in the question। मतलब अगर कुछ और है इसके अलावा तो वो भी दे सकते हैं, any other mode of discharge। So with this even these people are settled fine। इसके साथ क्या हो गया, हमारा जर्नल एंट्रीज पूरा खत्म हो गया। I will stop here, remaining we will do in the next lecture। Thank you very much everyone।